Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, lovely students. I hope and I wish you all are absolutely fine and also taking good care of yourself. From the Educators Online Support System, I am your science teacher and today I am here to deliver the final term lesson number 3 and today our topic is unit number 4 and chapter number 9. So dear students, the unit number 4, matter and materials, and chapter number 9, chemicals and chemical changes. And in this chapter, we will discuss the rusting and evaporation, and the last one is crystallization. Learning outcomes. At the end of this lesson, students will be able to explain rusting and also explain evaporation and crystallization. So the material required for this lesson are lead pencil, highlighter, ruler, blue pen, blue pointer along with your science book, your science notebook, and you will also need a winter pack that has been provided by the educators. So dear students, now open your science book and come to page number 95 and here you will see the topic rusting. So first of all, you all will be write down today's task, date and day on this page. Okay, let's start the reading. Rusting. So dear students, you must have seen a reddish brown layer on an iron bolt left in rain or in open air. प्यारे बच्चों, आपने इस चीज को कंसिडर जरूर किया होगा कि जब बरसात का मौसम होता है तो उस टाइम पर आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन लेयर हमें नजर आनी शुरू हो जाती है. So that reddish brown layer is called a rust. उसे हम rust कहते हैं. Rust का meaning है जंग. And the process of its formation is called rusting. और जिस process के through ये formation बनती है उसे हम rusting कहते हैं. The chemical name of rust is iron oxide. अगर हम rusting को chemically हम उसके name को discuss करें तो उसे हम iron oxide कहते हैं, which is formed from the reaction of air and water on iron. So there are two essential conditions for rusting. The first one is oxygen and the second is water. So this is a chemical change because rusting is a permanent. ये केमिकल चेंज होती है. अगर एक आयरन पर अगर रस्टिंग लग जाती है, उस पर जंग लग जाता है तो वो परमानेंट हो जाता है बच्चों. वो टेम्परेरी नहीं होता है, वो परमानेंट एक चीज को लग जाता है. लेकिन अगर हम इस चीज से प्रिवेंशन चाहते हैं तो आप आयरन की सरफेस को किसी भी ऑयल, ग्रीस या पेंट उसको कर दें आप, या उसको ग्रीस कर दें या उस पर ऑयलिंग कर दें, तो उसकी वजह से हम उसे टेम्परेरी तौर पर उसे प्रिवेंट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए. बट आफ्टर दैट रस्टिंग हमने अभी बात की कि वो परमानेंट होती है, तो टाइम के साथ साथ वो खुद ब खुद वो लेयर्स भी उतरना शुरू हो जाती हैं और दोबारा से उस पर रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है. सो दिस वन इज अ रस्टिंग. So dear students, now open your page number 96 and here the topic is evaporation and boiling point. So the first one is evaporation. Evaporation क्या होती है? A solid dissolved in water can be separated from solution by evaporation. Means evaporation एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक सोल्यूशन में से उसके टू सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं. Like if you boil the solution means कि अगर आपने एक वाटर में सॉल्ट को ऐड कर दिया, उसको मिक्सअप करके एक सोल्यूशन आपने बना दिया है, फिर आप उस सोल्यूशन को किसी भी पॉट में आप उसको हीट करने के लिए रख दें. एंड देन इफ यू बॉयल द सोल्यूशन, आप उसको बॉयल करें उस सोल्यूशन को जिस सोल्यूशन में आपने वाटर के साथ सॉल्ट को मिक्सअप किया था. अब हम चाहते हैं कि हम उस वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट करें, तो उसके लिए क्या एक प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम उस सोल्यूशन में से दोबारा से सॉल्ट को ले सकते हैं. तो आप क्या करें, उस सोल्यूशन को आप बॉईल करना स्टार्ट कर दें एंड अनटिल द वाटर गोस ऑफ, उसको इतना बॉईल करें कि उसके ऊपर से जो पानी है वो टोटली इवेपोरेट होता जाए बाहर इन्वायरमेंट में एंड यू विल गेट द सॉलिड इन अ फॉर्म ऑफ रेजिड्यू. आफ्टर दैट आप देखेंगे कि उस पॉट की बॉटम पर आपको व्हाइट सी लेयर नजर आएगी. दैट लेयर इज कॉल्ड द सॉल्ट.
सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सोल्यूशन में से सब्सटेंस को सेपरेट इजीली कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? The temperature at which a given liquid starts boiling is called its boiling point. Means कि वो टेम्परेचर जहां पे आपका लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, मीन्स कि उस पर बबलिंग आपको स्टार्ट हो जाएगी, तो वो पॉइंट जहां पे वाटर में बबलिंग आपको स्टार्ट हो जाती है उसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। So dear students, on a page number 96, there is another topic which is crystallization. Crystallization क्या होती है? The purest solid form of a substance having a definite geometrical shape is called a crystal. This one is the definition of crystal. So highlight this point. If you observe a sugar granule, you will find that it is a small cube. कि अगर हम शुगर के एक ग्रेन्यूल को देखते हैं तो वो हमें एक स्मॉल क्यूब की तरह नजर आता है। एंड दिस स्मॉल क्यूब आर कॉल्ड शुगर क्रिस्टल। तो उसे उस एक क्यूब को हम शुगर का क्रिस्टल कहेंगे। इसी तरह सोडियम क्लोराइड कॉमनली नोन एज टेबल सॉल्ट, मीन्स कि वो कॉमनली सॉल्ट जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं उसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं और केमिकली उसका नेम होता है सोडियम क्लोराइड। इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन अ नेचर इन अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। इसी तरह अगर हम सॉल्ट को भी देखें तो उसका भी अगर हम वन ग्रेन्यूल को देखते हैं तो वो भी सॉल्ट का एक क्रिस्टल होता है। सो वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। So dear students, on a page number 96, there is an objective for you. So firstly, we will solve this. And the caption is fill in the blanks. The first one is dash is the insoluble substance of a solution. Yes, solid. Solid is the insoluble substance of a solution. The reactions in which energy is released. Yes, students, which reaction is called a exothermic reaction. Third one, the reactions in which heat is absorbed are called endothermic reaction. The temperature at which boiling happens. Yes, which point is called? Yes, boiling point. The process of forming crystal of a solid from its solution is called crystallization. So dear students, now open your winter pack and now we will do the question answers of unit number 4 and chapter number 9. So the part C, answer these questions. Here the question number 1 is, what do you mean by a chemical substance and name its two types? ये केमिकल सब्सटेंस किसे कहते हैं और इसके टू टाइप्स के नेम क्या है? Any material with a specific chemical composition is called a substance. या आप ये डेफिनेशन भी राइट कर सकते हैं, a pure piece of matter is called substance. There are two types of substance, pure substance and mixture. Question number 2 is, what are the favorable conditions for rusting? जी स्टूडेंट्स, ये हमने आज इसी लेसन में इस चीज को हमने डिस्कस किया है कि रस्टिंग के लिए कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं। आंसर इज ऑक्सीजन एंड वाटर आर टू फेवरेबल कंडीशंस फॉर रस्टिंग। हाउ डू यू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड? लाइक फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, देयर फॉर्मूला इज CO2, sugar C12H22 and O11, table salt NaCl. Question number 4 is, differentiate between combination reaction and decomposition reaction. The first one is combination reaction. The chemical reaction in which two or more simple substances combine to form a complex compound is called combination reaction. And decomposition reaction, the chemical reaction in which a compound breaks down to two or more simple substances is called decomposition reaction. So the question number 5 is, differentiate between endothermic and exothermic reactions. The answer is, the reactions in which energy is released are called exothermic reaction. Means कि वो reaction जिसमें energy released होती है उसे हम exothermic reaction कहते हैं. For example, formation of water from hydrogen and oxygen. And the reactions in which energy is absorbed are called endothermic reaction. For example, dissolution of ammonium chloride in water.
Next, the question number 6 is, give an example of decomposition reaction. When current is passed through water, it gives off its constituent elements, hydrogen and oxygen in their gaseous state, and this process is called electrolysis. Water, after reaction, hydrogen plus oxygen released. Next is question number 7 is, give an example of displacement reaction. On reacting zinc with copper sulfate, we get zinc sulfate. Here zinc is more reactive than copper. Replace copper from copper sulfate. Like zinc plus copper sulfate means जब हम zinc के साथ copper sulfate को ऐड कर देते हैं, after that zinc sulfate plus copper is formed. What is barrier protection? Barrier कहते हैं रुकावट को, herder को कहते हैं. So iron surface can be coated with a layer of oil, grease or a paint which prevents exposure of iron to air and water. This kind of protection is called barrier protection. मीन्स कि अगर हम आयरन सरफेस को ऑयल, ग्रीस या पेंट कर देते हैं तो इसकी वजह से जो हमारी इन्वायरमेंट में एयर और वाटर होता है उससे हम आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं. इस तरह की प्रोटेक्शन को हम बैरियर प्रोटेक्शन कहते हैं. हाउ द क्रिस्टल्स ऑफ अ कॉपर सल्फेट कैन बी ऑब्टेन्ड. हम किस तरह से कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स को बना सकते हैं. Crystals of copper can be obtained by preparing its solution in which no more copper sulfate can be dissolved. Heat the solution and leave it overnight. And next morning we will find beautiful blue crystals. And the last question is question number 10. How do you prepare hydrochloric acid, HCl? Hydrogen and chlorine are two different elements, and they have their own properties. However, they react with each other. A compound called hydrochloric acid is formed. Like when hydrogen add with chlorine, after that hydrochloric acid is formed. So dear students, now it's time for your notebook work. So get ready for your today's task. So dear students, firstly write today's task, date and day on this page. Then write the topic, and the topic is chapter number 9, chemicals and chemical changes. Then write the caption, which is part C, answer these questions. Then write the question number 1, what do you mean by a chemical substance, and name its two types. After that, write its answer. Then write the question number 2, what are the favorable conditions for rusting. After that, write its answer. Okay, now write the question number 3. How do you write the chemical formula of a compound? So the answer is carbon dioxide CO2, sugar C12H22 and O11, and a table salt NaCl. Then write the question number 4. Differentiate between combination reaction and decomposition reaction. After that, write firstly the combination reaction topic, then write their definition. After that, write the topic decomposition reaction. After that, write its definition. Okay, now write the question number 5. Differentiate between exothermic and endothermic reaction. After that, write its answer. Then write the question number 6. Give an example of decomposition reaction, and then write its definition and also its example. Okay, now write the question number 7. Give an example of displacement reaction. After that, write its answer like this. Then write the question number 8. What is barrier protection? Then write its answer. Okay, now write the question number 9. How the crystals of copper sulfate can be obtained. After that, write its answer. Then write the last question, question number 10. How do you prepare hydrochloric acid? Then write its answer like this. So dear students, you all will be write down these question answers on your science notebook with neat handwriting.
So dear students, now it's time for your today's task, and in this task what you have to do? So firstly learn all the highlighted points of page number 95 till 96 of chapter number 9, and also learn and solve objective of page number 96 on book, and do part C 1 till 10 questions on your notebook. So dear students, I hope today's lesson was helpful for you and you all have understood all the points carefully. So take care of yourself. See you soon, inshallah. Till then, Allah Hafiz.